And today we have another exciting guest with us. I Anmol, I'm good. As I've said, I realized it the hard way कि भाई IPO तक अगर जिंदा ही नहीं रहेगी मुझे और डरना क्या है. There's nothing to be scared of. 20 साल है. So what's the impact you want to make in 20 years from now? I'm talking about a girl. हमने खुद हरियाणा में जो गांव में सैंपल किया था, वहाँ पे छोटी बच्चियाँ, adolescent women, girls, वो स्कूल नहीं जाती सर्दियों में क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है. तो उनके पेरेंट्स को डर लगता है कि मे बी शाम के टाइम छेड़छाड़ हो जाएगी. तो लड़कियां स्कूल तक नहीं जा पा रही है, पढ़ नहीं पा रही सेफ्टी के लिए. हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं. एम्पावरमेंट क्या ही करोगे अगर 50% ऑफ योर पॉपुलेशन डजंट फील सेफ. If you have a sister, I'm sure you can understand. For your female friend, girlfriend, you understand the kind of concern अगर वो बाहर अकेली होती है. तो यार ये डर जो है ना, ये अंदर बैठा हुआ है और बहुत केसेस पे केस के कितनी चीजें हमें. All right, welcome back viewers to our another exciting episode of our podcast series, The Young Turk Dialogues by Cropstickle. And today we have another exciting guest with us, Shrishti. So first of all, Shrishti, how are you doing today? How are you feeling to be here? Hi Anmol, I'm good. As I've said, I've just come very candid, not at all prepared. So absolutely looking forward to a very candid and a great conversation with you. I'm good. How are you? All good here. That's what we are looking forward to today. So Shrishti, you have done so many things, and when we were having our initial conversations, so that's what we were discussing. So from startup spark to now a serial entrepreneur, I won't be able to do justice to your journey. Why not you tell a bit about yourself so that our audience knows about you? Well, that's a very difficult way to start. So thank you so much. That just made me feel very grateful about a lot of things. So Anmol, I'm a serial entrepreneur, and I now happen to have around a decade years of experience of experimenting around ideation startups in the past before doing what I'm doing now. I have run few organizations. I've been part of companies in the healthcare space, in gaming space. We've run esports and online businesses. So I'm basically an entrepreneur. Happen to be experimenting. So ऐसे सब करते हैं starting में. Before you really understand that what is it that you want to commit yourself for the rest of your life. So happy to be now finally know. So I'm now currently the founder of Shakti Wearables. Shakti Wearables is India's first defense startup where we are creating a lot of non-lethal weapons and safety wearables, starting with, of course, women's safety. So for the last 4 years, this is what we've been doing. And we are creating a lot of different technologies and wearables based on this technology that is now patented. So we got our patent this year. So yes, so we are basically a defense startup experimenting, or I would say making a lot of safety wearables. And then the other part of this organization is making a lot of defense equipments and non-lethal weapons in future, hopefully for the Indian Army. So that's what we do. We are a defense company making these weapons. So that's interesting to know about your journey. But what was that movement or trigger that led you to, start with Shakti Wearables? What was that movement? Sure, usually when you must have spoken to a lot of founders where people start their journeys or their companies because they had faced a problem themselves कि मेरे साथ ये हुआ तो मुझे problem समझ आई. तो हम women safety के साथ शुरू हुए थे. That's what we wanted to solve. So fortunately Anmol, कोई personal story नहीं है कि मतलब fortunately ऐसा कोई incidents नहीं हुआ that triggered me. But I think it was a combination of two things. One was, of course, having those 6-7 years of experience of really understanding that entrepreneurship gives you the power to actually create solutions and ideas जो real life problems को solve कर सकते हैं. So entrepreneurship really gives you that power and freedom. And second, why not women's safety? I mean, women's safety has been a century-old problem. We are definitely not the first one to be identifying that. मुझे याद है 2012 का निर्भया केस as a reference case यूज होता है. It was an internationally recognized case. अब कोई केस होता है तो वो निर्भया 1.0 2.0 बोलते हैं, जो बहुत शर्म की बात है. आई डोंट नो ये पॉइंटर्स डालने वाले केसेस है नहीं है. तो मुझे याद है that I was around I think 14 years old. I was in 8th standard या 7th standard में, and my school was in Vasant-Kunj. And ये जो केस है दिल्ली में मुनीरका का केस था. तो हमारी ना बस एक्चुअली उस बस स्टैंड से जाती थी जहाँ से निर्भया और ये उनको पिकअप किया था उस बस ने. तो उस टाइम आप कुछ चीजें सुनते हो, आपके जहन में बैठ जाती है बचपन में, बट आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली हाउ डू यू रिएक्ट. थोड़े बड़े हुए एज गर्ल्स व्हेन वी गो आउट एंड बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली,
you see it. I mean, अगर आप 8 बजे तक घर नहीं आते हो, your parents are at least convinced जब आप कॉलेज में हो, यंग हो, अगर अकेले कभी कैब में जा रहे हो तो एक डर रहता है हमेशा लोकेशन शेयर करना. So I think unfortunately living in fear had become and has unfortunately become a part of everyday's women life कि वो इतना कॉमन हो गया है कि हमें वो प्रॉब्लम है तो वो है, लगती है, बट उसके लिए हो क्या रहा है. So that is when we thought that can we leverage technology to really cater to this fear that women have in their everyday travel, everyday work, because it has become a part of our lives. I think it was a combination of all these things. Being a woman, I could understand the fear or the challenges that every woman goes through. And second, if entrepreneurship gives you the power, तो शुरू में simple था कि यार try करते हैं. Let's see if you are able to make something better than what's already there. And if you are able to, then I think it's going to be a win-win for all of us. So for me, it was a combination of really understanding that pain and of course understanding that with entrepreneurship, with technology, we can actually at least try and leverage few things. So that is how we started around 4 years back. That was the point when I realized something needs to be done. That's very interesting how you begin. And yeah, you rightly said that it has become a problem that we know every day it's happening, but nobody is doing anything. Of course, you have started, but that's the thing. In people heads, it's like every day is happening. So in Dehradun, if I talk about, before COVID, it was the top 10 safe cities in India. Now it's top 10 unsafe cities in India. I don't know how we have, Dehradun. Okay, yeah, Dehradun, of course, I can vouch for. मैंने कहा दिल्ली तो कभी था ही नहीं लिस्ट में. It was never in the list. Yeah. Dehradun था top 10 safe cities. अभी top 10 unsafe cities में आ गया. So how did the transformation happen? So again, everybody who is living in Dehradun, they know things are going wrong here. Nobody is able to do it. Nobody is taking that. Now, since youth is also people are combining, they are getting on this initiative that we have to get by the city. But it's far late when we are starting now. But yeah, it's never too late, of course. So yes, I can relate what you just said. So from your entrepreneurial spirit, so you have built in gaming, edtech, healthcare, and now safety tech. How do you choose your next idea? What will be the thought? No, I don't want to choose my next idea. I would want to continue doing what I'm doing. Of course, having a lot of different products and product lines in the same company is what we intend to do. But ये जो starting में ये वाला phase होता है ना, तो I think पहले तो when I started, I had joined someone else's company as a co-founder. So that was to kind of understand, get the exposure to really understand how this industry works. Because बिना experience के business करने निकल जाओगे तो बेवकूफ बनोगे ही बनोगे. That is something that you know. So I think my initial years were more or less a lot of learning platforms for me. So I don't see them as failed entrepreneurial ventures. I rather see them as platforms that really gave me a lot of business insight, that really taught me a lot of things. पहली बार इन्वेस्टमेंट पिचिंग मैंने हेल्थ केयर कंपनी में सीखी थी. आई थिंक वो सीखा तभी आज हम we have been able to raise investments from Eastmat Trip. Launch Group is an investor, EvolveX is an investor. So I think now the reason that we're able to kind of really do and execute is because of things that you had learned in the past. So I think it took me a little time क्योंकि बहुत बारी ऐसे सक्सेस स्टोरीज में आप देखते हो कि पहली कंपनी शुरू की और वो बूम IPO. तो मेरे केस में वो नहीं हुआ. तो मेरे को लगा 1, 2, 3 टाइम लगा टू रियली अंडरस्टैंड एज टू व्हाट थिंग्स वेंट रॉन्ग. गेमिंग स्टार्टअप में हमने क्या किया था, हम लोगों ने मोर और लेस एक अपॉर्चुनिटी किया था कि कोविड में सब लोग घर में बंद है तो चलो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, लेट्स सी. बट देन वो डिक्लाइन इतना ज्यादा हुआ जब लोग बाहर आने लग गए. So that is where we realized that never go on a trend. A trend is very different from a business. So I think those learnings really helped me to pave my path or at least have a very clear understanding about what I want to do with Shakti. So what's next? Yes, a lot of defense product, a lot of men's safety gadgets, having not just women's safety bands, women's safety rings, gauntlets. We are planning a lot of creative stuff in R&D around making something for CRPF. तो अब करना यही है, बट प्रोडक्ट्स अलग अलग तरीके होंगे. तो व्हाट नेक्स्ट में तो शक्ति एट IPO. Let's manifest that is what I'm looking at least in the next, I don't know, 5 years, 7 years, 10 years. So let's by 2030 you watch this podcast again when you did the IPO. What are dreams of made of? चलो ठीक है, let's manifest that 2030 शक्ति IPO. Yeah, let's manifest that. That's interesting. So talking about this interesting conversation, the conversation is getting very interesting. So tell us about that one insight. So every entrepreneur, you also paved your own path. Everybody has different path. I also did something similar. I went to different jobs, and then somehow in COVID I got landed into business.
So it was not something that, yeah, okay, tomorrow I'm becoming an entrepreneur. It was something that, okay, I lost my job, what do I do next? So that kind of a situation. So what's one insight about entrepreneurial timing you wish someone told you about 5 years ago? Very interesting. I think, as you've said, one of the most important factors that we underestimate in this entire journey of entrepreneurship is the time. If you're doing the best thing but आप टाइम से पहले कर रहे हो तो लोग आपको पागल ही बोलेंगे, और अगर आप कुछ बहुत अच्छा करना चाह रहे हो बट उस टाइम कर रहे हो जब उसका टाइम चला गया या जब सभी कर रहे हैं तो उसका वैल्यू नहीं रहता. So I think you very rightly said, and I have personally experienced that in this gaming journey that I told you about. कि we were just about to pitch to investors and look at our pre-seed round, but उतने टाइम में 10 महीने में वो बूम आया और वो बूम चला गया. So that is when we realize that timing is actually one of the most crucial aspect when it comes to really deciding your entrepreneurial journey. So I think one thing that I wish I knew around 5 years back, I don't know, yaar. I honestly can't come up with an answer. I just feel कि even if I sit and I think that I wish I got the idea of Shakti 5 years back, I don't think I would have been able to execute it the way I'm able to do it today. क्योंकि वो होता है ना कि लाइफ में या जर्नी में कभी कभी कुछ गलत होना पड़ता है. जैसे आप कह रहे हो कि अगर आप वो वाली जॉब वाला सिचुएशन नहीं होता तो आप बिजनेस में कभी नहीं आते अगर वो सब अच्छा चल रहा होता. सो आई थिंक वन शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द रॉन्ग थिंग्स आल्सो हैपन, कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो होने दो, वो इवेंचुअली आपको किसी अच्छी चीज की तरफ ही लेके जाएगा. तो आई एम हैप्पी दैट आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि बुद्धि फिर आ गई ना, समझ आ गई, पता चल गया कि धंधे में बेवकूफ नहीं बनना, क्या करना है. पैसे जब गवाए या खत्म हो गए तब पैसे की वैल्यू रियलाइज हुई. सो या आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव द जर्नी एज इट वाज. Yeah, so I don't know. I'm just not getting an answer and more, but I just feel that we should learn to embrace the negative things that have also happened, because it takes you something close. Right. For. Whatever happens, Yeah. driving you to the end result, which we don't know. Exactly. So I think that's what I firmly believe. That was a very interesting answer that you just gave. So let's talk now about what's the biggest myth about building a tech product for women's safety. There are so many myths. You go online, you type on Google right now, there is a long list. But you being from the industry, executing it for last 4 years, we want to hear that from you. Yeah, I think the biggest myth in terms of inventing anything only, not just tech for women. I think when you're trying to build something that has not been built before, myth है, challenges है कहाँ? Because when you're the first one, the scariest thing is that there's no reference. Because what is happening if there's something that you are saying कि मुझे बनाना है और वो कहीं exist ही नहीं करता, तो या तो तुम बहुत ही बुद्धिमान हो कि जो तुमने सोचा वो किसी ने सोचा ही नहीं है, और यू आर एक्सट्रीमली स्टूपिड दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग जो लोगों ने शायद कंसिडर भी नहीं हुआ कि वो बनाना जरूरी है. तो आई थिंक वो सबसे डिफिकल्ट बात होता है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप और स्पेसिफिकली मेकिंग समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट अनमोल is an illusion, it's an imagination. So there's something in my head that I want to build, but I don't know वो बनेगा कैसे. And trust me, लोग आज हमें कहते हैं कि यार नहीं, चाइना में होगा, यूएस में होगा, और मैं बोलती हूँ कि मैंने कहा यार काश होता, अगर होता तो मुझे एक फ्लाइट पकड़ के जाना था, मैं वहां से प्रोडक्ट लाती, रिवर्स इंजीनियरिंग करती और बना देती, मेरी जिंदगी के 4 साल बच जाते, राइट? इफ इट वुड हैव बीन दैट इजी. सो दैट इज द बिगेस्ट मिथ. आई नीड टू बी एबल टू come check in fact with what will work, what will not work, and is your imagination real also. कि अगर मैं सोच लूं मुझे बनाना है और मैंने मान लो उस पर 20 साल लगा दिए, बट मुझे 20 साल बाद अगर ये पता चल रहा है ना कि वो विमेन को चाहिए ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है बनाने का. तो आई थिंक स्पेसिफिकली इन दिस स्पेस व्हेन यू वांट टू डू समथिंग दैट हैज नॉट बीन डन बिफोर और रेफरेंस नहीं है, तो सबसे जरूरी ये है कि जो आप सोच रहे हो ना पहले उसको वैलिडेट कर दो. Go out and talk to people. So in my case, our entire team, हम जाते थे और लड़कियों से बात करते थे, पूछते भी थे कि यार तुम्हें चाहिए ऐसा प्रोडक्ट या नहीं. फिर धीरे धीरे वैलिडेशन आता है. दैट इज व्हेन यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर कस्टमर. यू स्पीक टू देम, यू आस्क देम कि पेपर स्प्रे में क्या प्रॉब्लम है यार, एसवेस ऐप में क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों बनाएंगे. सो आई थिंक वैलिडेशन एटलीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग जिसकी मार्केट नहीं है, तो वो बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक इनोवेशन इन जनरल हैज अ लॉट ऑफ मिथ्स अटैच्ड विद अस. मतलब हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम था कि कुछ भी रेफरेंस नहीं था, तो इलेक्ट्रिकल वैल्यू क्या होगी, खुद को करंट कैसे नहीं लगेगा, किस इंटेंसिटी पे जाना चाहिए. इंडिया में टेजर गन्स बैंड है, यूएस में चलती है, कौन सा लॉ होगा, कौन सी डिपार्टमेंट होगी, कौन सी सर्टिफिकेट्स होगी. तो हम तो भूल भुलैया में थे. वी हैड टू पेव आवर पाथ आउट ऑफ इट. तो चैलेंजेस हैं, बट ये है दैट इफ योर रीजन इज स्ट्रॉन्ग दैट
I know why am I doing and what I'm doing, then you'll eventually sail through it. But बहुत मुश्किल है. मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मुझे दिखाना है कि कितना मुश्किल है. एक्चुअली मुश्किल है. अगर कुछ आसान करना है तो इट्स बेटर यू डू समथिंग दैट हैज बीन डन. एटलीस्ट रेफरेंस तो है कि यार उसने ये किया है, उसने गलत किया, मैं ठीक करके कर लूं. तो हमारी जर्नी तो सबसे टेक्निकल जर्नी वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अस. एंड वी मेड अराउंड 19 प्रोटोटाइप्स. और हमारे 8 टीम मेंबर्स तो हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं पता नहीं कितनी बारी, 11-12 बारी. खुद को कंट्रोल शॉक जब हम लोग टेस्ट करते थे, दिवाली नहीं, होली नहीं, लिटरली बीइंग लॉक्ड इन रूम्स. तो it was a very very difficult journey. So challenges at least starting phase में I think it's each to his own. हमारे लिए तो बहुत मुश्किल. But yeah, that will lead to something great. So 2030 IPO, you will have a good story to tell. Thank you so much. That makes me feel so good. I'm so happy listening to it. No, you will. So I got involved with this another company we have talked. So that podcast is also launched on our channel. So they are target also. So we met in Dubai. We were just standing there seeing the skyline, and then he said, "So what if we have a flat there, apartment there someday?" I says, "Yeah, why not? When we get an IPO for you, then that day." He says, "So then what date we should?" So okay. So today it's 28th October. So 28th October 2030. Yeah, let's do that. Okay. Just like that, we decided there. Okay, we are doing 2030 IPO. And now we are working on the plans. We did a quarterly. So yeah, that's why I said, aim for I. Let's see. That's the entrepreneurship, right? कुछ नहीं है उसको बना दो, कुछ नहीं है उसको कर दो. वही तो मजा है. So and people don't understand it, you know. A lot of people don't understand it. Yeah. Only the entrepreneur building and his close team can. Right. Nobody else. पागल लगते हैं. तुम पागल हो, तुम delusional हो. Like a lot of my friends think that I'm delusional. I'm like I'm fine being with it. ठीक है, I am delusional. Nobody understands. जब तक वो मार्केट में हिट नहीं होगा फिर आएंगे. So this is a journey that happens across the world. So अपना टाइम आएगा, अनमोल. अपना टाइम आएगा. Yeah. So let's एक केस स्टडी पे बात करते हैं. So if someone gives you 50 lakhs to build one city wide, मतलब it is very unpractical to say 50 lakhs because में एक city wide नहीं होगा. But let's say so city wide safety tech pilot. What it would look like? If someone gives me 50 lakhs to build what? One city-wide safety tech pilot. What it would look like? Like the first state that I would like to work on. Yeah. Rajasthan and Delhi, 100%. आपने सुना होगा कि दिल्ली being the rape capital of the world, वो हमने सुना है. तो we think कि दिल्ली में सबसे ज्यादा cases होते हैं. But ironically, since the last 4 years consecutively, it's Rajasthan. And I remember going to Rajasthan and meeting a very big politician there and telling them. So as an entrepreneur, you know how to state problems. You don't know, at least I don't know diplomacy. So I clearly remember I went to Rajasthan. Let's not name the political party. I met the so-called minister. मैंने कहा सर पहले दिल्ली था, अब राजस्थान है सबसे ज्यादा. यार वो offend हो गए. They actually got offended. They're like, how can you say this? I'm like, but that is what the statistics and yeah, as a politician, you will not accept ना. कि है मेरे उसमें तो वो मेरे को बोलने लगे तुम ऐसे कैसे बोल रही हो. मैंने कहा तो फैक्ट है, मैं क्यों नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे को तो प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन बताना है. सो राजस्थान इट्स वेरी बैड, इट्स एक्चुअली वेरी बैड. स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग इंडिया में हर 16 मिनट में एक रेप जैसा केस होता है, आज भी होता है अनफॉर्चुनेटली. इफ यू सी वेरी रिसेंटली न्यूज में आ रहा है कि दिल्ली में आई थिंक पिछले 6 महीने में more than 30,000 women have gone missing. So even I used to think before doing our R&D that Delhi is actually the most unsafe, but it's Rajasthan. And the facts and figures are very, very shocking because I clearly don't remember the digits, so it's better I don't say it on camera right now, but it's worse than the data which is in Delhi. So if I have 50 lakhs, the first state that I would want to go and course is Rajasthan. बड़ा भी है, बड़ा है और वहाँ पे women ज़्यादा हैं and they are more vulnerable. So absolutely Rajasthan going for. Got it. So in entrepreneurship, we generally go with storytelling and considering the kind of businesses we are doing. So how do you balance emotional storytelling with hard tech metrics when pitching? It's very difficult, trust me. It's very, very difficult because when we go out and when we talk about the problem and when we talk about the data and statistics, a lot of people feel bad. You know, they feel, अरे यार ये data है. And because of those reasons, at least till the time we don't talk about the tech, we are usually taken across as an NGO.
एटलीस्ट इन द इनिशियल ईयर्स वी वर कि यार ये शायद कोई एनजीओ है, कोई संस्था है जो महिला सुरक्षा के लिए काम कर रही है. So that is where we realize that you have to have a perfect balance of making people understand the problem, the cause, and also it's an art when you pitch to make sure that वो ज्यादा इमोशनल एंगल में ना चला जाए. उनके लिए प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है, बट अगर आप सिर्फ सेंटिमेंट्स में चले गए then you will lose out the grip of the technicalities and other things, and that stands true for us also, Anmol, because a lot of times my technical team has told me कि आप ना इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हो. जब हमें टेक्निकल चैलेंजेस आते थे तो वो मेरे को टेक्निकल चीज बोल रहे हैं कि मैम ये ऐसे काम नहीं कर पा रहे क्योंकि ये रीजन है, वो जो मुझे समझ आ रहा है, बट देन वन साइड ऑफ मी इज लाइक नहीं यार, विमेन सेफ्टी है, हम नहीं गिव अप कर सकते. सो वो बैलेंस करना कभी नॉट जस्ट व्हेन यू आर पिचिंग बट आल्सो एज एन इंडिविजुअल बिकम्स वेरी वेरी हैवी. बट आई थिंक नाउ इन द लास्ट 4 years एटलीस्ट आई हैव ट्राइड टू काइंड ऑफ बैलेंस इट कि ठीक है, द कॉज इज स्ट्रॉन्ग, इट इज बिग, सो लेट दैट बी अ मोटिवेशन. But let not that run you all the time. When you're in business or when you're building your research, you have to be practical. When I went to say EaseMyTrip or when we went to all the investors before we had closed this round, we had to answer hardcore questions. मैं जाके ये नहीं बोल सकती कि क्योंकि ये cause है और मैं बहुत passionate हूँ, आप please हमें fund करो. It never works that way. So I think you have to somewhere learn the art of keeping the cause a little bit aside, or at least use that for your own motivation, but also make sure that if you get investors or if you're raising money, that's purely on the numbers, the sales, the technology, the patents and everything. So I have learned it over the time, but yes, अगर आप सिर्फ, क्योंकि फिर पता है क्या होगा, फिर वो काम होगा जो सरकारी काम होता है. जैसे हम बहुत स्टेट्स में सीएम से मिले हैं, हम गवर्नर से मिले हैं, वी पिच्ड इट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो. तो क्या होता है, अब जाते हो, ताली बजती है, फोटो मिलती है, उसके आगे क्या. तो मेरा भी हो गया कि मुझे नहीं चाहिए फोटो. अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हो, आप हमें ऑर्डर दे रहे हो, अगर गवर्नमेंट हमारे साथ मिलके बांटेगी तो मेरा काम होगा ना. मैं फोटो खिंचवा के क्या करूंगी. मुझे नहीं चाहिए 500 लाइक्स इंस्टाग्राम पे, मुझे नहीं चाहिए 500 क्लैपिंग्स लिंक्डइन पे. वो स्टेज गई मेरी, अब मुझे वो नहीं चाहिए. सो आई थिंक यहाँ पे सिर्फ इमोशन से बिजनेस नहीं चलता, ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है. बट यू हैव टू लर्न द बैलेंस. अगर आपको लग रहा है एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर कि आप सिर्फ अच्छा करना चाह रहे हो और आप लोगों को जाके बोलो कि क्योंकि मैं अच्छा करना चाह रहा हूँ आप भी जुड़ो या पैसे दो, टाइम दो, क्योंकि हम सबको मिलकर अच्छा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता यार. ये तो मैं सीख चुकी हूँ. मतलब ये हार्डकोर बिजनेस है. यू हैव टू शो एवरीवन्स देयर ओन बेनिफिट. इफ द गवर्नमेंट इज कमिंग, what is there, what do they get out of it? That is also important. I mean, I know it's not the very right thing to talk about, but ये हमारे सामने आई है चीजें. हम हाँ यार, हम लोग गए हैं बड़े बड़े लोगों से मिलने और उन्होंने हमें मुंह पे बोला है कि ये तो ठीक है, हमारा क्या फायदा. मैं क्या फायदा बताऊं आपको. देश की महिलाओं की सुरक्षा मेरा काम नहीं है. अगर आप मुझे बिठा रहे हो कुर्सी पे तो शायद है, पर आज नहीं है. वो आपका है क्योंकि जनता ने आपको चुना है, बट आप लड़ नहीं सकते हो. मैं पहले लड़ जाती थी, मैं लड़ती थी पहले कि ऐसे कैसे. दे डोंट केयर, नोबडी केयर्स. सो यू हैव टू लर्न इट. यू हैव टू नो कि सोशल कॉज है, कुछ भी है, यू हैव टू शो देम कलेक्टिवली व्हाट इज इट ऑन द टेबल फॉर एवरीवन. मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स है, आपके पार्टनर्स है, दैट इज ओनली व्हेन द कन्विक्शन. इंजीनियरिंग टीम 4 साल फ्री में काम नहीं करेगी ना अनमोल. उनको तो सैलरी चाहिए. एग्जैक्टली. उनको वो कर रहे हैं मेहनत, बट उनको सैलरी चाहिए. सिर्फ महिला सुरक्षा के लिए वो नहीं करेंगे. तो या आई थिंक हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए टॉपिक से, बट यू हैव टू लर्न द बैलेंस. आई थिंक दैट्स द ओनली वे आउट. एटलीस्ट आई डिड द हार्ड वे, बट यू हैव टू लर्न. इमोशंस पे पैसे नहीं मिलते ना, ऑर्डर्स मिलते नहीं. राइट. या मोस्ट वीसीज, सो लाइक अभी आपने जैसे बात बोली कि फायदा, तो मोस्ट वीसीज दे से दे बैक वुमेन, बट वेरी फ्यू इन रियलिटी डू. So what's broken in the pitch room? मेरे को आईपीओ तक निकालने के लिए ना पैसे उठाने हैं. अब आप मेरे से सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर वो लोग देखेंगे, फिर वो कहेंगे ये तो बीसीस की बुराई करती है, छोड़ दो. Maybe a woman like who is doing good in business who invest. Okay. Great. So, but jokes apart, I would love to at least share my experience and how things have changed. So, I completely agree to the fact that a lot of VCs say that they back women founders, but in reality, the story is a bit different. And different in terms of what I feel is missing from the Indian startup ecosystem today is
that we don't have dedicated women funds. We don't. बहुत कम है. I think we have She Capital, we have 1 or 2 accelerators. ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नाम है. So I think what is missing is we have to have dedicated female funds. But आप किसी को फंड इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो फीमेल है. You also need to understand this. जैसे पहले I used to think कि यार विमेन फाउंडर्स नहीं है. पता है ये चीज मैंने बोलनी कब बंद की, जब मैं खुद विमेन फाउंडर बनी. बिकॉज we need to understand that if anybody is giving you a check, they expect a return out of it. It's not a donation. So and what is wrong is, I'll tell you what. So it's wrong to kind of judge a person on the basis of gender. That I completely don't agree with, क्योंकि मेरे साथ बहुत पहले हुआ है. बहुत पहले जब मैंने हेल्थ केयर कंपनी ज्वाइन की थी, I was I think 19-20 at that time. I was working for someone else. So I remember going to a specific investor and मैं किसी और का idea pitch करी थी, and I was a part of the company. I was a co-founder in the company, and my job was to go and pitch. So when I pitched, that investor, now it's been long back, that investor told me that I don't invest into women because एक दिन तुम्हें beauty का काम करना है, एक दिन मेकअप का काम करना है, और तुम लड़कियां बहुत कंफ्यूज होती हो. मेरे पास उस चीज का जवाब नहीं था क्योंकि मैं अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकती. मैं आई हूँ, आइडिया पिच कर रही हूँ. इफ यू थिंक आई एम क्रेडिबल, यू इन्वेस्ट इनटू इट. इफ यू थिंक आई एम नॉट क्रेडिबल, इट्स फाइन. सो दैट वाज रॉन्ग. सो जजिंग समबडी विदाउट नोइंग कि वो काबिल है या नहीं, वो गलत है. सो दैट इज समथिंग आई एम अगेंस्ट विद. बट पता है अनमोल, ये बोलना कि वीसीज वुमेन को बैक नहीं करते भी कुछ एक्सटेंट तक गलत है. मैं बताती हूँ क्यों. यार इंडिया में सोलो फीमेल फाउंडर्स है नहीं ज्यादा. Telling you, a lot of women founders, the trajectory has changed. Now there are more women in business. There are women who are taking leads. We have such good Shark Tank. Maybe we see Namita, national television. So these women have really gone out and changed the game. But solo female founders की अभी भी missing है. Although most of them are either couplepreneurs, that women is again a part of it. But we still don't have strong, solid women going out, taking the charge of the company on their own shoulders, on their own. इंडिया में वो भी देखने को नहीं है. और मानो टेक्नोलॉजी में तो और भी नहीं हो, डिफेंस में तो है ही नहीं. तो नहीं है. तो मुझको अभी थोड़ी देर पहले we were having some discussion. So there was some team and they are making some show on Indian entrepreneurs. So I was talking to them. So I told them, मैंने कहा यार आप लोगों ने हमें क्यों सिलेक्ट किया, हमें तो बहुत टाइम है. They were taking very big entrepreneurs. They're like मैम सीरीज में वो है, ये है, हम आपको लेना चाह रहे हैं. मैंने कहा भाई हमें तो बहुत टाइम है वहां पहुंचने में. So why are you taking us? They told me that आप, they said something very funny. They said कि आप ना scarcity में हो या आप ये हो, तो मेरे को हंसी आ गई. मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो. Then they made me realize, which I realize is true, कि नहीं है. अगर देर आर नो फीमेल्स इन द बिजनेस, बट सोलो फीमेल फाउंडर्स बहुत कम है. तो अगर है ही नहीं तो पैसे मांगेगा कौन. मांगेगा नहीं तो पैसे लगेंगे किस पे. तो पता है ये ना लूप है, ये साइकिल है. सिर्फ ये बोलने से कि विमेन को बैक करो से कुछ नहीं होगा. अरे विमेन को जाके करना भी पड़ेगा काम. लाइक यू हैव टू गो एंड आस्क फॉर इट. इफ यू डोंट डू इट देन वी कांट जस्ट सिट एंड कंप्लेन, राइट. एंड my perspective changed when I started Shakti, because this is a venture where I don't have a co-founder. In the previous ventures, I've always had like partners and founders. So, जब मैं गई, then I eventually raised, right? And whatever money we took, so we have done 2 rounds and both of them were on shows. So ये OTT पे release हुए थे हम investors के बाद. तो now I see the narrative कि जब 19 साल की उम्र में आप pitching कर रहे हो versus अब आप कर रहे हो 7-8 साल बाद, डिफरेंस है. आज शायद मैं नहीं देखूंगी कोई इन्वेस्टर ऐसे बोलेगा, और मुझे इसलिए लगता है वो इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि शायद मुझे मेरा काम पता है, उस टाइम नहीं पता था. तो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस. तो वी रेज्ड इन्वेस्टमेंट एंड आई थिंक फॉर्चुनेटली टिल नाउ आई हैव नेवर फेस्ड दिस, एटलीस्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टर. लोग जो बोलते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वी विल नॉट इन्वेस्ट बिकॉज यू आर अ वुमन. नो, दे डोंट से इट. आई हैव रियलाइज्ड दैट नाउ टुडे, बिकॉज आई नो माय जॉब, पीपल हैव मनी एंड दे विल इन्वेस्ट. और कुछ लोग तो ये भी सोच के करते हैं दैट यार हाँ यहाँ पे एड ऑन एक चीज है, दैट शी इज अ वुमेन फाउंडर. इफ दिस ग्रोज एंड दिस विल सर्व एन एग्जांपल टू लॉट ऑफ वुमेन एंड दे विल आल्सो कम एंड दे विल से दैट इफ शी कैन डू इट, मे बी आई कैन. सो आई थिंक दैट इज वेयर पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड, बिकॉज आई हैव सीन बोथ साइड्स. जेंडर बेस पे रिजेक्ट भी मैं हुई हूँ, और अब मैं देखती हूँ कि विदाउट एज अ सोलो फाउंडर भी मैंने फंड उठाया है. तो आई थिंक वो टाइम भी चेंज हुआ है, चीजें भी चेंज हुई है, नैरेटिव्स भी चेंज हुए हैं. बट यार फीमेल्स हैव टू गो एंड आस्क फॉर इट. सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि बैक नहीं करते. यार लड़कियां नहीं है, सच में नहीं है. मतलब देयर आर नो फीमेल, वेरी फ्यू फीमेल्स सोलो फाउंडर्स तो है ही नहीं.
So I just urge, if you're a woman and watching this, please come out, because Indian startup ecosystem needs you. Like, we need women to be talking about it. So yeah, ये था ना अच्छा. The women who are watching, you want to talk to Srishti, her LinkedIn is down below in the description. You can reach out. Yeah, LinkedIn, Instagram, wherever we are available, I'm active. So whenever I'll be more than happy. It makes me very happy if I see a woman coming and saying कि भाई मैं तो करूँगी, मुझे बहुत खुशी मिलती. I get very happy. Yeah. That's good. For our audience, you already got one offer from Srishti. So reach out to her, make the best out of it. Oh yes, would love to. Honestly. Yep. So Srishti, why not let's talk a bit about if you had to fix the startup funding funnel, what will be the 3 steps? If I had to fix the startup funding funnel, yes, first, I think it's high time we should let go of this entire narrative that profitability should take a back seat versus scalability. I mean, I believe that specifically you're a startup and you aim to be at an IPO, profitability should be there at least for the last 3 years, because I think this narrative is not taking people anywhere. As long as you're being heavily, being funded, you scale, financials में end में आप losses में ही रहते हो, तो दिक्कत देता है. I know that is important. I'm not saying that you should never be in losses. At least try to make a profitable company, that's fine. But what I understand is when you execute, of course there would be losses. But I just feel कि at least 3 साल की profitability तो देखो ना यार before IPO, because IPO means now the public invests money, which is very different from being heavily invested. So raising like 1,000 crores from a big BlackRock is very different when a person comes and invests 500 rupees. So I would personally love, I wish कि ये हो कि IPO निकलने से पहले 3 साल profitability रहो. जब तुम्हें पता है कि तुम profits बना रहे हो तभी public का पैसा लो, वरना मत लो. So that is one thing that I really would want. Second, in funding scenario, I think we should let go of this entire air around tech कि भाई सिर्फ tech करो, AI करो, drones करो. That's the only thing which is going on. I think it's time to let go of that as well. Or D2C. तो Indian startup ecosystem में क्या होता है, 6 महीने में एक wave पकड़ लेते हैं. D2C तो D2C. अब food tech तो food tech. फिर AI आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, और फिर ना वो ऐसे wave आती है और फिर वो wave चली जाती है. हाँ, तो वो बहुत confusing है. मतलब वो मुझे समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता. So I just feel that irrespective of the nature of the business, you should be open to the industry. So be like industry neutral. That would be the second thing. Third, funding scenario may change. Yeah, please have more women specific funds. I think we absolutely need it. We need specific funds for women. If we really want you see like good number of women in business, you have to have specific funds. पहले grants देने पड़ेंगे, थोड़ा उनको incentive देने पड़ेंगे, तभी I think they'll be able to come and do it. Because whenever I go for sessions and all, जो last मेरी TED Talk थी, मैंने ये पूछा, I go to the audience and I ask them कि आप 5 फीमेल फाउंडर्स के नाम बता दो, वो मत बताना जो शार्क टैंक पे है. And वो नाम नहीं होते लोगों के पास. People don't have names. Can you believe it? And that's the narrative that at least I would want to change. That at least for Shark Tank, do you know like 5 female founders? We don't know. So I think to have that kind of numbers, we have to give incentive to women, provided women come and ask for it. Again. Yeah. So these are 3 changes I would love to see in the startup ecosystem, in the funding space. Very, very clear. That's very good. That was a very good answer. So next, I would like to ask you some few of the case study type of rapid fire kind of questions. So if a D2C founder only had 1 lakh rupees, which in today's days is in Delhi nothing, to launch a startup, a tech startup. So where would be the first thing that if I put you in those shoes, you will be spending that money? 1 lakh rupees tech mein? Yes. To do something very fancy with AI, कोई matchmaking app बना दो, dating app बना दो, make some sort of SaaS platform and just somehow get people to onboard. Investment पक्का आ जाएगी. AI में कुछ अजीब सा बना दो, क्योंकि SaaS में ज्यादा पैसा नहीं लगता. कोडर खुद होगा, टेक फाउंडर है तो उसका तो 50,000 में भी काम हो जाएगा. So make something like this और लोगों को incentive दे के onboard कर, तो funding आराम से मिल जाएगी. So 1 lakh rupees का 50,000 में make a SaaS platform, make a dating app, make any thing of this sort, or whatever matchmaking platform, and you will get funds. It's easy. That I know the answer of. That amazing. That is very amazing. So our audience has now got the secret sauce of reading. Just go out there.
But yeah, it आसान comes यार with ऐसे a ही pinch होता है. of salt, so you need to first think about it. Yeah. So what? Next question: what's an unconventional power move you use to get media customers or investors? What's the unconventional power? What? Power move. कोई ऐसा power move हो आपका that you use to get media customers or investors? I think your product. For me, it's my product. For you, it's your People understand that there's something different and she's trying to do, so that helps us attract a lot of media attention. Yeah, got it. One last question. So, what's one part of your work you outsource completely and never touch yourself? Yeah, I wish I had an answer. I know this is rapid fire, but I think as a founder, you have to be jack of all and master of none. तो कंप्लीट आउटसोर्स तो नहीं कर पाते, आज तक तो नहीं कर पाए. मतलब हम लोगों ने काफी ट्राई किया. तो टेक से लेकर मार्केटिंग से, मे बी we'll have meta ad experts. We'll outsource that. So I'll answer it because it's rapid fire. I don't want to make a lecture out of it. Meta ads experts. Yeah. Okay, got it. Okay, that's interesting. So now these are more of the understanding your mindset, your thought process that you have built over your journey over the last 7-8 years. So how do you stay grounded while being in this profiling? What's your self audit system? So every founder has it. So yeah, for me it happened in August. So my partner from Canada came in. He asked me, so now 5 years has passed. How does the next 5 years look? I was like, oh yeah, we are doing this. Okay. Have you ever thought going global? Yeah, we are already global. No, actually stepping out of your country and setting your foot somewhere else. Never. From India, everything can happen. Why do I need? So that was a place where I did a full self audit on myself. And then in 3 days, he told me, yeah, let's book our tickets to Dubai. We are going to Dubai. So talking about those kind of things. So how do you stay grounded while being profiling, and what's your self audit system? Sure, I think I've learned it the hard way, but I've realized, and I've realized it with a lot of pain, that ego is the end of everything. So it eventually is that. And the issue with at least me, or the kind of work that we are doing, is कि it grab eyeballs. It does. चाहे वो मीडिया अटेंशन है या गवर्नमेंट अटेंशन है या पॉलिटिशियन अटेंशन है, हमें मिल गया है. और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं हमने मेहनत नहीं की, हमने बहुत मेहनत की है, बट मुझे लग रहा है कि जल्दी मिल गया. कि हम लोगों को शायद लगता था कि हमें पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना हो गया तो वो हो गया. तो लॉट ऑफ टाइम्स ना यू एक्चुअली आप एक इल्यूजन में रहने लग जाते हो कि अरे यार अब तो सेट है, अब तो हो गया, अब तो बस होने ही वाला है, अब तो 6 महीने में 100 करोड़ मैंने नहीं कमाए तो किसने कमाए, ऐसा प्रोडक्ट होगा, ये होगा. So actually don't get into that space. But what I've realized is that ego is the end of everything. And how do I keep a check of myself is that I keep on reminding myself that I know exactly why I started and I know exactly where do I want to go. तो अगर मुझे थोड़ा सा भी लगने लग जाता है oh my god, I think I'm doing great and it's so amazing, ये होने वाला है, वो होने वाला है, I'm so better than the rest of the world, I think I just give myself a check, I tell myself to shut up and then say बेटा तू यहाँ खड़ी है, तुझे वहाँ जाना है. Where do you stand when you look at the 10-year आगे वाली सृष्टि? And I realize I'm not even 10% of where I want to be. नहीं ना, तो आ जाओ, जमीन पे आ जाओ, अब धरती पे आ जाओ, ऑफिस जाओ, काम करो और लोगों से काम कराओ. So I think that is how I keep a check on myself. कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत चीजें करनी है तुमने शुरुआत भी नहीं की है. Just because you're getting some validation, don't let it get to the head. And अनमोल होगा क्या अगर मैं छोटी छोटी चीजों से, again it's not that I'm ungrateful, I'm very grateful for everything that has happened, every single thing. So I don't take that for granted at all. But again, very grateful whatever has happened. So I love this quote that whatever has happened, whatever success you get, you just forget about it and you keep on working on the challenges. And I think that's the best self audit system. और धीरे धीरे when you keep yourself as a check, क्योंकि पता है क्या, गोल बदलता रहेगा. पहले गोल था एक फंडिंग राउंड लेना. अब अगर वो फंडिंग राउंड पे आप पहुंच गए और आपको लगा कि मैंने तो जिंदगी में सब अचीव कर लिया, तो जर्नी एंड ना. तो फर्स्ट फंडिंग राउंड हो गया, ग्रेटफुल फॉर इट, अच्छा. सेकंड, दूसरा फंडिंग, व्हाटएवर, मैं फंडिंग का सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, दैट डेफिनेटली इज नॉट अ माइलस्टोन. थर्ड हो सकता है कि ठीक है, अब आज जैसे हमारा है कि यार अगले साल तक हमें 2 स्टेट्स में शक्ति को डालना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट वो हो गया, अगर मैं वहां सेटिस्फाई हो गई, देन अगेन इट्स द एंड ऑफ द जर्नी. सो आई थिंक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग ट्रिक दैट यू हैव टू कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ दैट एवरी टाइम यू गेट टू अ गोल, चेंज द गोल, डू इट, कर दो. गोल अचीव करते ही गोल बदल दो, ताकि तुम्हें पता हो कि कल उठ के मुझे करना क्या है. बिकॉज अगर वही सक्सेस देखते रहोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे. एंड आई थिंक दैट्स द इजीएस्ट वे टू किल योर जर्नी, आई हैव रियलाइज्ड. Very interesting and very
true what you just said, because most people, अच्छा अभी गोल हो गया, अब क्या आगे हो गया, चलो ठीक है जीत गए, चलो घर जाओ सो जाओ. इजी है डिस्ट्रैक्ट होना आज के टाइम पर, बहुत आसान है. आधे से ज्यादा दिमाग को मीडिया खराब करता है. करेक्ट. ये फैक्ट है. हाँ सच में. मेरे को बीच में लोग, मेरी टीम वाले चिढ़ाने लग गए थे, अरे आप तो मैम गवर्नमेंट में चले जाओ, आप तो ये करने लग जाओ. मतलब लिटरली दे हैव बीन टेलिंग, एंड दे आर नॉट सेइंग इट sarcastically, they genuinely mean it. But I'm like, what are you saying? So it's very easy to get distracted today. तो you have to keep a self check. मतलब मेरा तो ये है कि यार अगर मेरे को A to B जाना, मैं अभी पहुंच गई ना, B को रात को मैं गोल बदल दूंगी कि अब ठीक है ये हो गया, थैंक यू भगवान जी, हो गया. हाँ अब मुझे C पे जाना है, लेट मी फोकस ऑन दैट. गोल ही बदल दो. डोंट लेट योरसेल्फ एंजॉय. I do that. I do it all the time. It's not healthy. It's not healthy. Please be grateful. Yeah. So what's your relationship with ambition today? Fuel, fire, or friend? Now I think I've integrated ambition within myself. So it's a friend. I've become this. So I think ambition is my friend, and I hope it stays a friend. It shouldn't become your enemy, because a lot of times when you get over ambitious, you start killing your own, happiness. You start killing your own, whatever the good things in yourself. So I think I've had that relationship with it, because I've allowed my health to suffer for a very long time because of being super ambitious. And today, this year, मतलब मैं इस साल तो literally I've not been able to go out to a lot of places, events. मैंने बहुत कम कर दिया because my health really took a backseat. So I realized it the hard way कि भाई IPO तक अगर जिंदा ही नहीं रहेगी, मुझे ये मोटिवेशन है मेरा. सोचो लोग मुझे बोलते हैं IPO तक जिंदा नहीं रहेगी तो क्या फायदा मेहनत का. So let ambition be your friend. Don't let it become your enemy. और डरना क्या यार? There's nothing to be scared of. Just let it be your friend and do your work. It's very simple. Yeah. Nice. So you mentioned in this previous answer about आगे जो 20 साल है. So what's the impact you want to make in 20 years from now? I honestly haven't thought of 20 years, but I've definitely thought of 10 years. 10 साल का मैंने सोचा 10 हुआ years. है. Let's talk 10. 10 years, अभी IPO हटा देते हैं मजाक के लिए, but if I just talk about the impact that we intend to create. So अनमोल, हम दो चीजों पे आज बहुत ज्यादा फोकस्ड है. हमने ऑलमोस्ट 3.5 साल लगा के विमेन सेफ्टी का बैंड बनाया है, और हमारा तो लिटरली गोल है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक क्लास, जिस लड़की को छोटे से छोटे गांव, कस्बे, शहर, कहीं पे भी इसकी जरूरत है तो उस तक ये पहुंचे. हम पहुंचाए, CSR पहुंचाए, सरकार पहुंचाए, अलग बात है. बट वन थिंग वी हैव रियलाइज्ड दैट अनफॉर्चुनेटली women are vulnerable, and I'm not talking about the women who can afford a cab every day. I'm talking about a girl. हमने खुद हरियाणा में 2 गांव में सैंपल किया था. वहां पे छोटी बच्चियां, adolescent women, girls not women, वो स्कूल नहीं जाती सर्दियों में क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है. तो उनके पेरेंट्स को डर लगता है कि मे बी शाम के टाइम छेड़छाड़ हो जाएगी. तो लड़कियां स्कूल तक नहीं जा पा रही है, पढ़ नहीं पा रही सेफ्टी के लिए. हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं. एम्पावरमेंट क्या ही करोगे अगर 50% ऑफ योर पॉपुलेशन डजंट फील सेफ. If you have a sister, I'm sure you can understand. For your female friend, girlfriend, you understand the kind of concern अगर वो बाहर अकेली होती हैं. तो यार ये डर जो है ना, ये अंदर बैठा हुआ है, और बहुत केसेस पे केसेस, कितनी चीजें हमें तो पता भी नहीं है. 99% of things are not shown on the media. So I think the kind of impact that we want to make is कि a product लो use करो is a different thing. The point is that will we ever be able to make a society, or at least try to make a society जहाँ पे जो अंदर का डर है खत्म ना हो, कम हो सकता है. That's my point. इसलिए प्रोडक्ट का नाम भी शक्ति है, because शक्ति means Lourdes Durga, and she's powerful. She's one of the most powerful Lourdeses and goddesses that we have. And I personally feel that every woman has a Durga or Shakti within herself. पर वो पहचान नहीं पाते हैं. You have to understand that. So I think with Shakti, of course, the intention is कि हम गांव तक पहुंच पाए, वहां उन बच्चियों तक, उन छोटी लड़कियों तक जो डर के मारे केसेस रहती हैं, जो डर के मारे बोल नहीं पाती, जो पढ़ नहीं पाती, बेसिक जिंदगी नहीं जी पाती. तो ऑफ कोर्स विद शक्ति, दैट्स व्हाट, विद दिस प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट वी इंटेंड टू डू. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली वी आर मेकिंग समथिंग फॉर द इंडियन आर्मी एज वेल. दैट्स इन R&D. तो वो 1.5 साल से R&D में चल रहा है. DRDO के साथ एटलीस्ट वी हैव डन द इनिशियल पिचिंग. दे रियली लाइक व्हाट वी आर डूइंग. वी आर ट्राइंग फॉर सम फंडिंग, सो डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग. They're actually making a gauntlet. तो इंडियन आर्मी में ना स्मार्ट वॉच बैंड है, एंड द रीजन इट्स बैंड इज बिकॉज ट्रैकिंग हो जाती है. तो आपके सोल्जर्स ने जो घड़ी पहनी वो ट्रैक हो सकती है. So we are actually creating something, a wearable that can allow us autonomous tracking without GPS, without satellite, without Wi-Fi. So that is something that we are making, and that's a very big project. We're working for the defense. And if that happens, तो इंडियन आर्मी, हमारे जितने भी जवान हैं बॉर्डर पे, नेवी सोल्जर्स, एयरफोर्स,
they will actually be able to communicate even at high altitudes without being tracked. So that is a very big impact project that we are working on right now, and I'm very excited for it. So ये दो चीजें ना हमने दिमाग में डाली हुई हैं. And of course, if we have something in between, तो ठीक है. मेरे को तो non-lethal weapons बनाने हैं आर्मी के लिए. मैं तो बोलती हूँ non-lethal चल के तो मैं lethal भी बनाऊंगी. So, but then that has no end to it. But right now we are very focused on these two spaces because I'm very sure कि 10 साल में अगर हम इसको execute कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी, बहुत बड़ी. And that is how we want to make our contribution. So yeah. Very interesting and very good vision. I hope that it becomes a success. आपने तो IPO बोल ही दिया. IPO तो हो गई. Yeah. So it was very interesting. So those were the things that I had in mind to discuss on this podcast. And firstly, I would like to say thanks to you for coming on this episode and sharing all the valuable information. And it was good talking to you. So a boring podcast episode, Nita, it was engaging, and we can see the passion that you brought to the episode. And then the second thing is that thanks to our audience who watched the episode till here. So oh yes, thank you so much. Although we had an interesting conversation, so I'm sure we gave them the content to stay around. Yes, of course. But, it is. Absolutely. It is one of the engaging. Yes. Yes. So lovely. Thank you so much for having me. And I'm glad we did it. And मेरे को ऐसे ही लगा था I'm speaking to a friend, so मेरे को लग ही नहीं रहा है. That is how I always talk. कि बोलना शुरू तो बस बोल दो. Yeah. So no, it's good. ऐसे ही होना चाहिए. Yeah. Thank you so much for having me, and of course, thank you to the audience if they are still watching it. So yeah. Thank you. And thank you once again to our audience. Thank you once again, Shrishti. Do like, subscribe, share on this episode. If you have any questions, you can reach out to Shrishti directly on her LinkedIn or wherever. We will take links from Shrishti. We'll put them in the description. If you still have any questions, you can directly put them in the comment section, and we will reach out to Shrishti and get back to you with those. So thank you for our audience for watching this episode, and we will be right back again soon with another exciting episode on our podcast series, The Young Tech Dialogues by Cropster. Till then, bye.